in phase 2, there are 6 more temples that will come up in this temple complex, and that would be all around in the southern part of this temple. As you look at this temple complex and work that's happening almost round the clock, the 6 other temples, the 7 additional temples that will be made here will be the Maharshi Valmiki temple, the Maharshi Vashisht temple, the Maharshi Vishwamitra temple, the Maharshi Agast temple. There is something about our country's culture which is extremely, extremely significant. The fact that everyone comes together for work to happen. Even if you're Lord Ram, to cross Ma Ganga, you need the Kevat Raj or the Nishad Raj. So there is a Nishad Raj temple that is coming up. Ma Shabri, who fed bear to Bhagwan Ram, there is a Ma Shabri temple that is coming up. There is also a Mata Ahilya temple that is coming up. Again, an effort to show that even for Lord Ram, everyone has to come together to make his work happen. We've talked about the Hanuman temple that's coming up. We've talked about the Ganesh temple that's coming up. We've talked about the Jatayu temple that's coming up. And when you read the Ramayana, all of them played a very significant role in the life of Maryada Purushottam Shri Ram. But the beginning, of course, happens. He was born here in that place where the temple is coming up, where the Garbh Grah of the temple is coming up. That is where Lord Ram was born. The effort, as far as the temple administration is concerned, is to ensure that a temple lasts the next 1,000 years. The reason why iron is not being used, because iron has a life of between 80 to 100 years, 120 years max. Beyond that, there is a decay. The effort is to ensure that there is no decay when this temple is there for future generations to come. Also, the contribution of people from different parts of the country. We spoke to some of the workers who were here, who've come in from Karnataka, some who've come in from Maharashtra, some who are here from Gujarat. A large number of workers are here from Rajasthan, Madhya Pradesh, Orissa. There are also workers here from other parts of the country. Those who are engaged in the stonework predominantly are this Bansi Paharpur stone. And I want you to take a closer look at this stone from this Bansi Paharpur rock. It's easier to carve out this rock. And in these rock carvings, you will notice that the Sanatan culture or the Hindu culture, it's depicted virtually in every block of stone that is created here, that is being used here. This was conceptualized initially, the use of Bansi Paharpur stone, and that concept is still being used. We'll try and speak to more engineers engaged in this project, but more than just the construction of a temple or giving a boost to the economy of Ayodhya or giving employment to thousands of these workers, the bigger message that actually goes out here is the cultural reunification of Bharat. Lord Ram, his life was all about how everyone came together. So from Ayodhya, killing demons, after slaying the demons, he also went to Janakpur, where he married Mata Sita. So an invitation has gone out to Janakpur, an invitation has gone out to Sitamarhi. People will be coming from there in large numbers. There are invitations that have gone out to over 125 different sects or puja padvatis that are followed in our country, and more than 4,000 saints and seers are expected here on the 22nd of January when the Pran Pratishtha takes place. There is also a very interesting way that this will happen. So the process of the Pran Pratishtha will start on the 16th of January. The idol of Lord Ram will travel to various temples in Ayodhya, because Ram Lala, or that 5-year-old child, will actually see
his area before he ultimately comes here to the Garbhagriha. Now, the main idol which is being built, so 3 different idols of Lord Ram are currently under construction. 2 using the Karnataka Krishna Shila from Karnataka, and 1 using marble from Makrana. Ultimately, one of those 3 will be selected for consecration at the Garbhagriha. It will be a standing idol of Lord Ram, of a 5-year-old child, Ram Lala. And you would be able to see the eyes of a 5-year-old child and the feet of a 5-year-old child. So it will be a 51-inch tall statue of Lord Ram. While we talk about it, I also want to show you another image. Work that goes on almost non-stop. So one section of workers have completed their work and they are now going home, while another section of workers are coming, and you can hear chants of Jai Shri Ram. So let's get closer to some of these workers. यहाँ क्या जय श्री राम के नारे लगते रहते हैं काम के दौरान? जी बहुत क्योंकि सबको बहुत खुशी है राम मंदिर बनने की, तो इसलिए सब लोग जहाँ पे भी मौका मिलता है जय श्री राम के नारे लगाने से पीछे नहीं हटता कोई भी। तो इस समय आपको ये सब काम लगता है कि आपको लगता है कि आप भी रामचंद्र जी के काम के लिए यहाँ पर आए हैं? यहाँ रामचंद्र जी के काम के लिए आए हैं। यहाँ पर हम काम करने वैसे एक्चुअली नहीं आए हैं। ठीक है जी सर। क्या नाम है आपका? कहाँ गया? हरकेश कुमार है, जौनपुर के रहने वाले हैं। और आपका क्या नाम है? आपका? मेरा नाम गुरपिंदर सिंह है, पंजाब से हूँ, गुरदासपुर से बटाला से। और आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? जहाँ मैं LNT में जॉब कर रहा हूँ, लेकिन श्री राम जी ने हमको भी मौका दिया है इधर सेवा करने का, तो उन्होंने बुला लिया। अभी मेरे को 2 महीना हुआ इधर आके, लेकिन हमको बहुत खुशी है इधर काम करके, अभी सेवा करके हमको बहुत अच्छा लग रहा है। मन को बहुत संतुष्टि हो रही है। इधर आए हैं तो लग रहा है कि राम जी ने हमको भी अपनी सेवा करने का हमको मौका दे दिया साथ साथ। अच्छा, और गर्भगृह में आसपास कितना काम हो गया है? आपको क्या क्या लगता है, किस गति पर आप काम कर रहे हैं? नहीं, गर्भगृह का जो काम है बहुत स्पीड से चल रहा है, और मैक्सिमम काम जो है ना गर्भगृह का खत्म हो गया है, और जहाँ पे रामलला जी की मूर्ति विराजमान होने वाली है वो एकदम रेडी है। क्या बात है। और यही कहा भी जा रहा है, और यहाँ कुछ महिला कर्मी भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश हम करते हैं। क्या नाम है आपका और आप यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं? मेरा नाम दक्षता है। मैं यहाँ पे कंसल्टेंट आर्किटेक्ट की तरह आई एम वर्किंग है। सो आई एम टेकिंग केयर ऑफ ऑल द फ्लोरिंग वर्क एंड द इनले वर्क विच इज गोइंग ऑन ग्राउंड फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर पे जितना भी काम चल रहा है, जो भगवान रामलला का जो सिंहासन बना है उसका भी पूरा काम मैंने ही देखा है। उधर हो गया है वो काम पूरा, अभी उस पे सोने का पतरा चढ़ने के लिए गया हुआ है, तो वो आके वो भी तैयार हो जाएगा। और काम काफी अच्छा चल रहा है यहाँ पे, हम काफी मेहनत से काम कर रहे हैं। आपको क्या अनुभूति होती है कि आप गर्भगृह में काम कर रही हैं, जहाँ रामलला स्थापित होंगे, उनकी मूर्ति वहाँ पर स्थापित होगी? बड़ा अच्छा फील होता है, मतलब कि वो ऐसी जगह है जहाँ पे आज से करीबन 1 महीने बाद में, 1 महीना भी नहीं बचा अब तो, वहाँ पे रामलला जी विराजमान होंगे। उधर हम कम से कम 10 दिन तक सुबह से शाम तक वहीं पे खड़े थे, तो बहुत अच्छा महसूस होता है कि वो अपॉर्चुनिटी हमें मिली कि हम वो कर सकते हैं। तो हर कोई कहता है कोई अच्छा पुण्य करा है जब आपको इतना अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आप भगवान जी का सिंहासन खुद से बना रहे हैं। और कैसा होगा भगवान जी का सिंहासन? भगवान जी का सिंहासन करीबन 3.5 फुट ऊंचा है, पूरा सोने से पूरा लथपथ होगा। अंदर फिर भी अंदर बहुत मोटा सफेद पत्थर लगाया गया है जिसपे भगवान विराजमान होंगे, और पूरा आगे घड़ाई का सोने का काम होगा उसके ऊपर। अच्छा, कहा यह जा रहा है जो दरवाजे बन रहे हैं बड़े बड़े सागौन टीक के, वो भी स्वर्ण मंडित है, पूरे सोने के बन रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी दरवाजे बन रहे हैं, गुड़ मंडप में जो भी दरवाजे लग रहे हैं, गर्भगृह का जो भी लग रहा है, वो सब पूरा सोने से ही कवर रहेगा पूरा। और 14 फुट ऊंचे दरवाजे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो हाइट है मतलब मंदिर का अपना, उसके हिसाब से दरवाजे बन रहे हैं पूरे। देखने में कैसा लगता है? मतलब हम लोग को तो जो अनुभूति होती है वही बिल्कुल एक दिव्य भव्य अनुभूति हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे काम करके हमें भी ऐसे लगता है, मतलब जब भी पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक हम लोग यहीं पे रहते हैं, तो मंदिर में घूमते हैं तो ऐसा ही लगता है कि कितने मेहनत से यहाँ पे हर कोई काम कर रहा है, रात भर काम चलता है, तो अनुभूति बहुत अच्छी होती है। मतलब माता पिता परिवार वो लोग क्या बोलते हैं? वो लोग बहुत खुश हैं, बहुत गर्व महसूस करते हैं
कि यहाँ पे साइट पर बहुत कम, मतलब मैं खुद की बात करूँ तो बहुत कम लड़कियां काम कर रही हैं जो सिर्फ साइट पर है, मुश्किल से 3-4 होंगी। तो उसमें से उनको बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारी बच्ची ऐसी जगह पे काम कर रही है जहाँ पे हम बाद में जाके बोल सकते हैं कि ये इसने यहाँ पे खड़े रह के इतने टाइम तक काम करवाया है। तो आने वाली पीढ़ियां कितनी इसको महसूस करेंगी। आपका पूरा नाम क्या और आप रहने वाली कहाँ? दक्षता अग्रवाल, मैं जयपुर से हूँ, राजस्थान। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दक्षता। तो आर्किटेक्ट है दक्षता और यहाँ पर राम जन्मभूमि में वो भी गर्भगृह में काम कर रही हैं। और जिस तरह से जो अनुभूति होती है, आप सोचिए कि उनका परिवार भी यही कह रहा है कि कुछ तो अच्छा काम किया होगा पूर्व जन्मों में कि ये मौका मिला, यहाँ आकर काम करने का मौका मिला। यहाँ की जो मिट्टी है ना, वो भी लोग उठाकर न केवल अपने माथे पर लगा लेते हैं बल्कि उसे अपने साथ ले जाने की भी उनकी इच्छा रहती है कि ये राम जन्मभूमि की मिट्टी है। यहाँ पर मैं आपको कुछ और आगे जाकर आपने तो यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं आप तो बिल्कुल हनुमान जी। सर मैं महाकाल कंपनी के सुपरवाइजर हैं और हम लोग काम करवाते हैं। इसमें 31 लेबर हमारे लगे हुए हैं, काम करवा रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है सर, कई वर्षों की तमन्ना पूरी हो रही है। अपने नगर में है, हमेशा राम जी दिल में बसते हैं। पंडित आदमी है सर जी, सेवा करने का शुभ अवसर मिला, इससे बड़ा कोई चीज नहीं है सर। हाँ, ये बात तो है। हाँ।